एक्सेल में मैन्युअली डेट्स टाइप करना बैन करो। इसे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि मिस्टेक्स भी बढ़ा रहे हो। चलो सीखते हैं 2 सेकंड कैलेंडर ट्रिक। सबसे पहले अपनी स्टार्ट डेट एंटर करो और फिर कीबोर्ड पर प्रेस करो Alt+E+I+S। बूम! एक सीक्रेट सीरीज मेन्यू ओपन होगा। यहाँ कॉलम्स सिलेक्ट करो, फिर वीकडे पर क्लिक करो। एक्सेल को बताऊं कि कब स्टॉप करना है, और मैजिक देखो, सारे वीकेंड्स ऑटोमेटिक स्किप हो जाएंगे। अब डे नेम रिवील करने के लिए यूज करो टेक्स्ट फंक्शन। बस एक सिंपल ड्रैग Select your और column, डन। click this hidden magic icon. Hit duplicate. Every repeated entry highlights instantly. Still manually typing out the sum formula in Excel? Please drop the keyboard. There is a hidden 1-second shortcut that does this instantly. Just highlight your numbers, hold down Alt, and press equals. If you are still manually typing out data from a screenshot like this, please stop. There is a secret Excel feature that will do this for you in seconds. Just head over to the top ribbon, click the Data tab, and select from Picture. Choose Picture from File, grab that screenshot, and let Excel do its magic. Excel reviews the image, now just hit Insert Data, and boom, it's all perfectly formatted. 10-second Excel trick to look like a pro. Stop manually splitting full names in Excel. Type the first name, hit Ctrl+E, type the last name, and hit it again. Boom. Full is split in 2 seconds. Stop manually deleting broken data spaces. Clicking into every single cell to backspace these gaps is wasting your day. Instead, select your columns and hit Ctrl+H, type a single space, and leave the replace field completely blank. Click Replace All and boom, every rogue space vanishes instantly. Subscribe for अगर more. आपके पास फुल नेम्स की एक लंबी लिस्ट है और आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है, तो फॉर्मूला मत लगाओ। बस पहले नाम के आगे फर्स्ट नेम टाइप करो, नीचे आओ और दबाओ Ctrl+E। इसका उल्टा भी उतना ही आसान है। अगर फर्स्ट और लास्ट नेम अलग हैं, तो बस पहले सेल में उन्हें एक साथ लिखो, नीचे वाले सेल पर जाओ और प्रेस करो Ctrl+E। ईमेल लिस्ट से नाम अलग करना है? फॉर्मूला छोड़ो, पहले ईमेल का नाम साइड में लिखो और दबाओ Ctrl+E। एक्सेल सारे नाम खुद निकाल देगा। कस्टम ईमेल बनाना। मान लो आपको सब एम्प्लॉयज के लिए एक खास पैटर्न में कंपनी ईमेल आईडी बनानी है। बस पहले एम्प्लॉय का ईमेल सही फॉर्मेट में टाइप करो, नीचे आकर प्रेस करो Ctrl+E। सबके प्रोफेशनल ईमेल्स रेडी। टेक्स्ट फॉर्मेट बदलना। अपर या लोअर फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सारे नाम स्मॉल लेटर्स में हैं और आपको उन्हें कैपिटल करना है, तो बस पहला नाम कैपिटल में टाइप करो और दबाओ Ctrl+E। सारा टेक्स्ट रीफॉर्मेट हो जाएगा। Stop wasting time manually styling your Excel tables. Just select your data and hit Alt+O+A. Pick a stunning layout, click OK, and boom. Flawless table in seconds. Stop for more. manually copy-pasting messy comma data in Excel. Just select your column. Press Alt+A+E, choose comma. Set destination, and boom. Perfectly split in seconds. Stop manually comparing two lists in Excel row by row. Just highlight both lists and press Ctrl+/. Boom. Every mismatch is instantly selected. Highlight them and follow for more. Just select your entire sheet. Press Alt+H+O+I to fix the columns, and Alt+H+O+A to fix the rows. Follow Why for typing more. out full formulas just to get an average in Excel? Stop. Just select your entire dataset and click this hidden magic icon at the bottom. Go to Totals, hit Average, and stop wasting time writing manual formulas for every single calculation. Instead, press Ctrl+A to select your data, then hit Ctrl+T to turn it into a smart table. Now press Ctrl+Shift+T for the hidden total row. Just use the built-in drop-downs to get your sum, average, or count instantly. Subscribe for more tricks. Stop losing track of your data rows while working in Excel. Just hit Alt+W+F to turn on Focus Cell. Boom. Now your active row,
and column highlight automatically. इस Subscribe. बिखरे हुए CSV डेटा को मैंने सिर्फ 2 सेकंड में ऐसा परफेक्ट बना दिया। कैसे? चलिए देखते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले अपने इस डेटा पर कहीं भी क्लिक करें और कीबोर्ड पर दबाएं Ctrl+A। अब ऊपर मेनू बार में डेटा टैब पर जाएं और यहां टेक्स्ट टू कॉलम्स पर क्लिक करें। अब इस विंडो में डिलिमिटेड ऑप्शन को चुनें और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहां सिर्फ कॉमा वाले बॉक्स को टिक करें और सीधे फिनिश पर क्लिक ना करके डेस्टिनेशन पर जाकर फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करें। फिनिश पर क्लिक करें और ये लीजिए, आपका काम चुटकियों में हो गया। अब आपका डेटा एनालाइज करने के लिए पूरी तरह रेडी है। अब अपने डेटा की फॉर्मेटिंग करके आप काम शुरू कर सकते हैं। ऐसी ही और क्विक एक्सेल ट्रिक्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें।